पता नहीं क्या कौन सा क्वेश्चन है अभी मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं था 9 था और सेकंड था नहीं किया कौशिक नहीं आया कौशिक लास्ट टाइम भी नहीं है भूल गया तो लगा कि अभी तो छुट्टी में तो पढ़ा नहीं रहेगा ना बता मेरा इधर ले दो आला बोल दी क्या वो एक्सीलरेशन क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 17 ये करना था क्या अच्छा बता क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 8 हाँ बराबर क्वेश्चन 9 हाँ क्वेश्चन 17 हाँ क्वेश्चन 21 हाँ ये करना थे हाँ One more student to come. yes sir Kaushik. Show me where did we stop in the last class? काम क्वेश्चन Oh Lord. Former moves along the square field. So we have completed the speed and velocity. acceleration retardation yes sir So even acceleration, we did all that tossing of pen and all that. It was little difficult to understand, but how is it now? Now normal. So I'll just put down on the board what we have done so far. Okay. If you have any problem, just let me know. So we have covered so far in chapter motion. We have covered distance and displacement. velocity Right? We have covered speed and velocity. Right? Have we covered acceleration? yes sir We have covered acceleration. graphical is meaning Yes. We'll now today start graphical representation of motion. So till here, quickly tell me what is the unit of distance, meter unit of displacement, meter unit of speed. meter per second Very good. Unit of velocity. meter per second Very good. What is the difference between speed and velocity? Speed is scalar. distance Velocity is velocity that is speed. displacement is unit Is velocity. And this is scalar and this is vector vector. What is the difference between scalar and vector? has only magnitude Which is scalar. scalar And has both magnitude and direction very good, very good. So these differences should be known. Then what is acceleration? sir Unit. meter per second Meter per second squared. वही कैसा? So कभी भी physical quantity you will recognize by its unit. ठीक है? Unit gives formula also. Meter in the numerator, times square in the denominator. That's how the unit. Got it? From the unit you can calculate backward. What is the formula? So what will be speed? Distance upon time. yes sir So what is the unit of distance? Meter. What is the unit of time? Second. Meter per second. So once this funda is cleared, physics becomes very easy. Okay. Now today, now in acceleration, when is acceleration positive and when is it negative? so when the speed is increasing continuously in equal intervals of time Yes, then it is positive. So when acceleration is in the direction of velocity, then velocity will increase. So A is positive. If it is in the direction of velocity. Is it taught in school also, this chapter? yes sir it is over completed It is over in school. Arey wah. today only So, it is completed yesterday only okay. And when is it negative? when it is stopping like it is in the When it direction is against the against the direction. direction of velocity So you have to remember these things. That is against direction the direction of velocity.
gains. Okay, so this is also called retarded. Okay, now let's begin the graphical representation of motion. So it becomes very easy to learn motion when we study it graphically. Okay, meaning we will represent the parameters of motion on graph x and y axis of the graph, right? So on the x axis we represent time. So there are so many types of graphs. Let me Then we have to write this. everything that we like. This is revision. That's it. This you can leave. This we did in the last class, right? From here you can write. So there are three types of graph. One is First equation on this. distance, displacement, distance or displacement versus time graph. Distance or displacement versus time graph. This is the first graph we'll study. So in graph you might have already studied that on the x-axis we keep time, which is measured in seconds. Okay. And on the y-axis we keep displacement. Distance or displacement. This is the motion in one direction, so both are same, right? Sir, can you draw this? Yes, you can draw this. Now you know that time will continuously increase, right? Time will continuously increase 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. And with time, let us say body covers 5 meters in every 1 second. How is the body traveling? It is traveling 5 meters in every 1 second. So after 1 second, where the body has reached 5. So where will you draw the point? Here, at the intersection. 1 and 5. At the intersection, right? This is how you draw the point. Then at 2, it reaches 10. So you draw a line parallel to x-axis. Then draw a line parallel to y-axis from 2. So this is where it meets. Okay, this is how you draw the graph. So by experience, if you know, then you need not draw the dotted line. I have just given you one example how to draw these points. So at 4, it will be at the intersection of 20 and 20. at 5, it will be at 25. 25. Right? So what you see is that the graph is when you join all this point, you will see that the graph is a straight line. Right? So likewise at 6, you will find that it is at 6. So is this a uniform motion? Yes, sir. Yes. So for uniform motion, you will find the graph, displacement time graph to be a straight line. So this is uniform motion. It's a straight line. And it is uniform motion, it can be easily verified. In 1 second it travels 5 meters. In next 1 second, from 1 to 2, what is the time interval? 1 second. Then it covers how much? 5 to 10, again 5 meters.
So it is uniform motion graph is a straight line. Straight line passing through origin. Okay. Let's try to draw another graph. You tell me what kind of graph is this. So for now I'll use the symbol for displacement as S, for time as T. S in meter, T in second. Let us say we have a graph like this. What graph is this? Displacement time. See how to know which graph it is? Just see the y-axis and x-axis. So it is displacement time graph. So what does the graph tell you? Time is changing. Let's say time increases from 0 to 1, 2, 3. Is displacement changing? Let us say it is 5, 10, 15, 20. From 0 to 1, what was the displacement? 15 only. 1 to 2, again 15 only. So is the displacement changing? No. Then what is the graph showing? Yes. So whenever the displacement, right? So whenever in the displacement time graph, when the curve is parallel to x-axis, it means what? Body is at rest. Yes. So this graph shows. Body is at rest. Why? Since the displacement of the body is constant with time. You understand this statement? Displacement is constant with time. Okay. So I'll give you one more graph. How the displacement is changing now in each time interval? It's not changing as well. It is displacement time graph for non-uniform velocity. Correct. Non-uniform Velocity. motion. Velocity. Non-uniform motion you say, so velocity is changing. See, now look here. What is happening is, let's say this time was 1, 2, 3, 4, 5. So each time interval is of 1 second. Now in that time interval, just see how the displacement is changing. In the first case, let's say it is going only up to 2.5 meter. Okay. 20. So in the first second, how much it is traveling? About 2.5. In the second time interval, we project it. Now see it is more than 2.5. So from here to here it was 2.5, but it is little more than that. So it is not same.
Now let us look in the third time interval. Here, how to find? It is even bigger than the second time interval. See, in the first time interval, first 1 second it traveled only this much. Second time interval it traveled from here to here, this much. Now it traveled this much. So with every time interval, the displacement is increasing. So it is non-uniform motion because unequal distances are covered in equal interval of time. Got it? So this is a graph of non-uniform motion. Clear? Now with graph, one is by looking at the graph only you can now tell what kind of motion it is. Straight line, uniform motion. Curve, non-uniform motion. If it is parallel to x-axis, what is at rest? Got it? Now let us understand what is slope. Y2 minus Slope of S versus T graph. What is S? speed. No, sorry, distance. Distance or displacement. Distance or displacement. Okay. So what is slope? In mathematics, By 2 minus y1, yes. In by 2 minus mathematics, y1 upon x1 plus x1 plus x2. so what is slope in mathematics? Slope is defined as slope First equation of motion, na? change in y-axis First upon. equation. That's different. That's a different one. Change in y-axis upon change in x-axis. This is in mathematics. Okay. So for this graph, so for S versus T graph, S versus T graph, what is the change in y-axis? Graph. Slope is equal to. Now let us say we find this, right? From 1 to 3 seconds. Let's call this as T1 and 3 as T2. So between this time interval, T1 and T2. So what is the distance corresponding to T1? Let's say S1 equal to 5. And distance corresponding to T2 is, let us say, S2. So S2 is equal to 15. S1 is equal to 5. T1 is equal to 1 second. T2 is equal to 3. Okay. So you can select any 2 points for finding the slope. We want to find change in y-axis divided by corresponding change in x-axis. So just select any 2 points, drop perpendicular on y and x-axis respectively. So corresponding to this point on the curve, the displacement is 5 and the time is 1, like that. Got it? So find the change now. This will be change in displacement is S2 minus S1 divided by T2 minus T1. Correct? How do you find the slope? Change in y minus change in x-axis. So this is what it is. But what is this? Change in displacement over time interval. What is that? Velocities formula. Correct. Or speeds formula. So slope of displacement versus time graph gives velocity or speed. Okay. Therefore,
which is therefore slope of S versus T graph gives speed or velocity. Understood? So how much is the speed? Now calculate here. So this is 15 minus 5 divided by 3, this is 1. This is 10 divided by 2. This is how much? 5 5 per second. meter per second. So from unit also you know that it must be either speed or velocity. Got it? So slope of distance or displacement versus time graph gives speed or velocity. Okay? So now there should not be any confusion about what is slope. So why we call it slope? Because it is the angle which the curve makes with respect to x-axis. So it is a slope, no? If it is plane, there is no slope. Slope is the inclination, right? So for a straight line, there is just one slope, isn't it? For a straight line, is it slope changing? Is the slope changing for a straight line? No. So for uniform motion, the slope is constant. Slope constant means velocity is constant. And we have already learned it, that for uniform motion, the velocity must be constant. So you can verify it also. Choose any other 2 points. Let us say you choose to find the slope between 3 and 4, between the time interval 3 seconds to 4 seconds. So what is the slope here? So what is the change in y-axis? This is the change in y-axis. 20 minus 15. So it is 20 minus 15 equal to 5. What is the change in time axis? 4 minus 3 equal to 1 second. 5 So therefore, what is the slope for these 2 points? Let's call this as this was point A, this was point B. Let's say this is point C. So slope here is equal to 5 by 1. Again 5 meters per second. So for a straight line, find slope between any 2 points. You will always get the same answer. Okay? So note, for uniform motion, slope is always constant. And whenever we say slope, we mean speed or velocity. तो ये फंडा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी स्लोप की बात करते हैं, कभी वेलोसिटी की बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, कभी डिस्टेंस इक्वली चेंज हो रहा है, तो हम एक ही चीज के बारे में अलग अलग टाइप से बात करते हैं, ठीक है? तो अभी कंफ्यूज नहीं होगे ना? ठीक है, ये हो गया। तो अब हम जिस ग्राफ के बारे में लिख देते हैं, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट आ गया। यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप क्या आ गया? कांस्टेंट। इस ग्राफ में स्लोप कितना है? सर कांस्टेंट ही रहेगा, 0 है। कांस्टेंट इस ग्राफ में क्या है? कांस्टेंट तो है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 0। मतलब उसकी स्पीड क्यों? क्योंकि उसका कुछ एंगल बन रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ। ऐसे होता तो कुछ एंगल होता ना, तो स्लोप होता है। इसमें स्लोप है ही नहीं, स्लोप 0। तो 0 स्लोप मींस बॉडी एट रेस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे कैसे स्लोप निकालोगे? ठीक है, तो समझो हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला। यहाँ पे स्लोप सेम है क्या?
देखो टेंजेंट पता है क्या तुमको? टेंजेंट स्लोप का और एक वर्ड लिख लो, स्लोप यानी टेंजेंट। At the point on the curve. Tangent at the point on the curve. tangent हाँ, अभी टेंजेंट क्या होता है भाई? टेंजेंट पढ़ा क्या तुमने सर्कल में? देखो मैं बताता हूँ, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, ये देखो अगर कोई सर्कल है, सर्कल सर्कल के बारे में तो पढ़ा होगा। हाँ देखो ये सर्कल है, अब सर्कल पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो टेंजेंट क्या होता है। इस पॉइंट पे अगर हमने यहाँ पे रेडियस बनाया है, ये रेडियस हो गया, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? टेंजेंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट पे सर्कल में कोई सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक ऐसा लाइन जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, वो टेंजेंट होता है। अब रेडियस तो अब हर पॉइंट पे रेडियस क्या होता है? जो सर्कल सेंटर को ज्वाइन करे, ठीक है, ठीक है ना? रेडियस तो हर जगह सेंटर को ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? जो परपेंडिकुलर टू रेडियस, वो वाली लाइन। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा, ये प्रॉपर्टी तुम सीखोगे आगे चलो, समझ आ गया? तो कोई भी कर्व, अब ये पार्ट अगर तुमने इतना सा पार्ट लिया तो ये कर्व हो गया एक तरीके से, है ना? तो कोई भी कर्व क्या होता है? सर्कल का पार्ट होता है। अगर ये कर्व है तो ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा, ठीक? तो उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाना है तो इट शुड बी वन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट कर्व। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अब समझो ये वाला ये पॉइंट है, तो इसको टेंजेंट समझो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ये कर्व को हमने एक सर्कल का पार्ट माना तो उसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में। अब ये भी एक सर्कल है तो इसका टेंजेंट किस डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? अगर तुम इसको आगे लेके जाओगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है और इसका ऐसे चेंज हो गया। अब इसका डायरेक्शन किधर आ गया? इसका डायरेक्शन और अलग आ गया, यानी पहले स्लोप ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर और ऐसे, स्लोप बढ़ते जा रहा है। हाँ, कर्व में स्लोप क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है हर पॉइंट में। और कैसे चेंज हो रहा है? बढ़ते जा रहा है एंगल। अब यहाँ पे जाओगे तो इसका एंगल क्या और ज्यादा बढ़ गया। समझ आया? स्लोप बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है? एंगल बढ़ रहा है। मतलब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? मतलब कर्व में उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? स्पीड स्लोप कांस्टेंट है। कभी स्लोप बोलूंगा कभी स्पीड बोलूंगा, अब कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए? तो ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? नहीं। तो इसमें स्लोप क्या है? स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। समझ आ गया? इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्लोप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। बस अब मेरे बच्चे सारे एक्सपर्ट हो गए, ठीक है? बस यही समझना है, बाकी तो सब टाइम पास। इसमें अभी नहीं है, 11 12 में। इसमें खाली तुमको बता, इसमें तो स्लोप बताना भी नहीं है, मैंने जस्ट बता दी कि ये स्लोप हर बार चेंज हो। ये इसलिए पता है क्योंकि टेंजेंट का कॉन्सेप्ट अभी लास्ट में ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
बताया क्या तुमको स्कूल में? सर्कुलर मोशन हाँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बताया। वही सर्कुलर मोशन ही यूनिफॉर्म सर्कुलर हाँ बता। बताया ना। चलो ये लिख लिया तुमने, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने, सब लिख लो। लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? हाँ। मिटाओ उसको। चलो हमने ये वाला पार्ट मिटाओ। नेक्स्ट ग्राफ हमारा क्या है? जैसे डिस्प्लेसमेंट था, अब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टोटल कितने ग्राफ है? दो ही ग्राफ, मतलब दो टाइप के ग्राफ, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। हायर क्लासेस में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी आएगा। कितना बढ़ रहा है एक सेकंड में, 2 सेकंड। वो है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या तो वर्सेस लिखते हैं, नहीं तो बीच में माइनस करते हैं। आगे ओके ऐसे कर लो। हाँ, लेकिन वो सिंपल ही रखने वाले हैं, क्योंकि जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे एक्सीलरेशन भी चेंज हो रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है। अब यहाँ पे हो गया वेलोसिटी, ये क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी हमने इसको तो मैंने तुमको बोला, क्या बोला कि यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। चलो बनाओ सब लोग। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? मतलब क्या होता है स्लोप का? नेचर क्या होता है स्लोप का? कांस्टेंट होता है, जीरो होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा होगा ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। लेकिन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। कैसे? इक्वल इन इक्वल इंटरवल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। यही तो समझना है। तो ये दोनों ग्राफ सेम दिख रहे हैं लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि y एक्सिस यहाँ पे वेलोसिटी है, वहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड है, जीरो नहीं है वेलोसिटी। यही तो समझना है। So this represent uniform motion. Since velocity is constant. अब एक और ग्राफ बनाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये अभी हम सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ रहे हैं। पहला क्या था? डिस्प्लेसमेंट टाइप। फर्स्ट जो हमने सीखा था वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या सीख रहे हैं? वेलोसिटी है। इसलिए नोट्स बनाओ, मतलब जो मैं दे रहा हूं तुमको बिल्कुल सिस्टमेटिक है। ये मैंने रखे हैं कंपैरिजन के लिए ग्राफ, ठीक है। तो अब हमारा हर बार क्या है? वेलोसिटी एंड टाइम। ये मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ? ताकि तुमको मीनिंग समझे। तो वैसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड,
टाइम तुम्हारा क्या है, सेकेंड्स। ये ग्राफ थोड़ा मैं हाथ से बना रहा हूँ तो बराबर से नहीं आ रहा है, स्केल से बनाओ तो बराबर आ जाएगा। अब ये कौन सा ग्राफ हुआ, स्ट्रेट लाइन है तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है यूनिट इंटरवल में, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है हर सेकंड में। तो इसमें एक्सीलरेशन है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है मतलब वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है हर इंटरवल, यानी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते जा रही है हर सेकंड में। पहले सेकंड में 5 थी, नेक्स्ट सेकंड में 10 हो गई, फिर नेक्स्ट सेकंड में 15 हो गई, नेक्स्ट में 20 हो गई, समझ रहे हो? तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अब एक और ग्राफ देखते हैं। अब कौन सा ग्राफ बचा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ बचा। सर एक्सीलरेशन है क्या? ये तो बने हुआ एक्सीलरेशन है। तो अभी हम लोग को नहीं है ना, है ना? तो आपने बोला आगे जाके है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं है, अभी ये क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये कैसा ग्राफ हो गया देखो, हाँ ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। अब एक चीज और देखो, जब भी लाइन ऐसे रहती है एक्स एक्सिस को तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, जब भी लाइन ऐसे रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, नेगेटिव स्लोप मतलब रिटार्डेशन। समझ आया? समझ आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें S2 कम होती है S1 से। ये देखो, मान लो अगर हम यहाँ से यहाँ पे स्लोप निकालें, यहाँ पे ये दो स्लोप निकालें, ये हमारा हो गया, ये T2 है और ये हमारा क्या हो गया, ये T1। समझो, हम इसको वैल्यू दे देते हैं, ये हो गया 5, 10, 15,
20, ठीक है। तो T1 हमारा कितना है? T1 मान लो हमारा 0.9 सेकेंड, ठीक है। T2 हमारा 1.7 सेकेंड, ठीक। अब हमारा जो V1 कितना हो गया? T1 पे जो है वो V1 हो जाएगा 15, और V2 कितना है? कुछ 7 के आसपास, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। अभी अगर हम स्लोप निकालें V वर्सेस T का, सबसे पहले तो V वर्सेस T ग्राफ के स्लोप हमको क्या देगा? तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ, हाँ, तो ये क्या दे रहा है हमको? V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ये दे रहा है। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, जैसे स्लोप ऑफ ST ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, वैसे स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन हम किसके लिए निकाल रहे हैं? फ्रॉम पॉइंट A टू B। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB, ठीक है, AB में निकाल रहे हैं। तो ये कितना मिल गया हमको? देखो V2 हमारा 7 है माइनस 15 अपॉन T1 कितना है हमारा? 1.7, सॉरी 0.9, सॉरी T2 माइनस T1 है 1.7 माइनस 0.9, 0.9 है, क्या चीज? 0.9 है, वही लिखा है ना, T2 माइनस T1 होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब ये 7 माइनस 15 कितना हो गया? माइनस 8 डिवाइड बाय 17 माइनस 9 कितना हो गया? माइनस 15 0.8, माइनस 8। तो ये कितना हो गया? माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन। सर -10 कैसा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, -10 ऐसे आया, ये देखो ये 0.8 मतलब क्या हो गया? ये -80/8 हो गया। 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, 80/8 हो गया, क्या हो गया? 10 आ गया। इतना डिटेल में बताया था क्या स्कूल में? नहीं पढ़ाया नहीं अभी तक। तो जो पढ़ाना चाहिए वो, इसलिए तो चैप्टर खत्म हो जाता है ना, फिर तुमसे फिर क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। ये तो कहानी है भैया। तो हम लोग को भी हम लोग का ऐसा नहीं पढ़ाया सिखाया। बाकी है। सर हमारे टीचर बार-बार चेंज होते हैं, तो पहले से आते अभी टीचर आई है तो आपको समझ में नहीं आता, ग्राफ चल रहा है। कोई यहाँ हम समझाएंगे, इसके लिए तो तुम लोग हमारे पास आओगे ना। स्कूल की थोड़ी समस्या है। तो अब देखो, अब अगर तुमको समझो ये O है, O और A के बीच में स्लोप निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अगर समझो इक्वल इंटरवल्स पे, हाँ, तो स्लोप, अब देखो स्लोप ऑफ OA निकालते हैं हम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? तो इसका अभी हमारा T1 0 है और V1 भी 0 है, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन पे ये T1 और V1 दोनों 0 है। तो ये -0 आ गया, ठीक है, ठीक है भाई। और जो T2 है अब वो क्या हो जाएगा? 0.9, ठीक। और जो V2 है वो 15 हो जाएगा। तो अब क्या मिला? 15 डिवाइड बाय 0.9, ठीक है, 15 डिवाइड बाय 0.9।
ये हो गया 150 डिवाइड बाय 9, ठीक है, ये हुआ। अब इसको करो सॉल्व, कितना आता है? 9 1 जा 9, सो 60, 9 के टेबल में 60 आता है क्या? नहीं, कितने टाइम जाएगा? 5 9 5 जा 45, 60 और ज्यादा जाएगा ना? 6 9 54 9 6 जा 6 अपन 60 आएगा। 9 6 जा तो 16.6666 ऐसे आएगा ना। ये इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे क्या था? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो देखो जब भी स्लोप तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, लीनिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तब क्या होगा? लीनिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, हाँ। रिटार्डेशन। भाई ये किधर झुका है? एक्स एक्सिस की हाँ, तरफ, एक्स है। और ये किधर झुका है? वाई एक्सिस की तरफ। तो व्हेनेवर लीनिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, तब वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो। तो जब भी कर्व इज लीनिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इट इज नेगेटिव। ये समझ लो, ये पूरी हर क्लास में 9 10 11 12 आदि का यही कॉन्सेप्ट है। ये तुमको मैथ्स में भी हेल्प करेगा, जिस तरह से मैंने स्लोप समझाया है, मैथमेटिक्स में भी तुमको ये काम है, ठीक। मजा आ गया? अब ग्राफ का कुछ भी सस्पेंस बाकी नहीं। तो चलो नोट्स लिख लो। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब ये नोट्स में लिख देते हैं। V वर्सेस T। सो स्लोप ऑफ, तो पहला क्या है? स्लोप ऑफ V वर्सेस T ग्राफ, VT ग्राफ, that is V2 minus V1 upon V2 minus V1 gives acceleration। किसका एक्सेलरेशन? जो बॉडी मोशन कर रही है। ये ग्राफ किसका? बॉडी का है, ठीक है, ठीक है, गिव्स एक्सेलरेशन। सेकंड, एक और चीज है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द चोजन टाइम इंटरवल। एरिया अंडर VT graph gives the displacement covered by the body in the chosen time interval। ठीक है, तो देखो क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इनटू t, ठीक है। बट v इनटू t क्या हुआ? वेलोसिटी इन टाइम। हाँ, ये हो गया एरिया। एरिया कवर्ड टोटल इन VT ग्राफ। V इनटू T क्या होता है? एरिया इन VT ग्राफ। देखो कैसे? Suppose I am asking you, look at this VT graph. Tell how much displacement is covered by the body from 2 to 3 seconds. ठीक है? तो उसके लिए तुम क्या करोगे? 2 to 3 सेकंड
में ऐसा दो लाइन बनाओ ऐसा, अब ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो टाइम इंटरवल क्या हुआ ये, और ये क्या हो गया डिस्टेंस वेलोसिटी। वेलोसिटी ये तुम्हारा v है और ये तुम्हारा t है, तो v इंटू टी क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, वो एरिया हो गया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो v इंटू टी क्या हो गया, एरिया हो गया ना। बट v इंटू टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सही बात समझ में। 2 into 15 45 or 30 That is 30 meter क्या बोल रहा हूँ, मतलब सो ये v हमारा हो गया 15 हाँ और t हो गया 1, कैसे 3 minus 2, 3 minus 2 1 ही है ना, v कितना हो गया 15 और t कितना है 3 minus 2 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये दो चीज मिलता है हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द चोजन टाइम, ठीक है। वही चीज अगर मैं तुमको यहां पे बोलूं कि 2 और 3 सेकंड के बीच में, या 1 और 3 सेकंड के बीच में, हाउ मच वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो तुमको ये मिला, ठीक है। तो क्या मिल गया तुमको, तो ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया बराबर, समझो मैं इसको ए बी सी डी ई कर दिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 and 3 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 and 3 सेकंड इज हाउ मच, एरिया ए बी सी डी, तो डिस्प्लेसमेंट second is equal to area A B C D E, ये है। ये समझना, समझ अगर ऐसे ही समझ में आ गए बगैर लिखे तो मत लिखो, मेरे अच्छे लिख लोगे तो बेटर हो। तो ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया, this is equal to, this object is divided into area of triangle BCD plus area of rectangle क्या है ABDE, करेक्ट। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, 3 minus 1 2 हो गया, ये टाइम है ना, टाइम कितना है 3 minus 2 equal to, और 3 minus 1 equal to 2 सेकेंड, ये इंटरवल देखो, ये कैसे निकालते तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, ये तुम्हारा कितना हो रहा है यहां से यहां तक, ये b है, तो यहां से यहां तक तो 5 है, d कितना है 5 है, और यहां से यहां तक कितना है 15 minus 5 10 है, समझ गए, ऐसे करना है, 10 मीटर पर सेकंड ये है और 5 मीटर पर सेकंड ये है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बेस टाइम है ना 2 सेकंड है, तो ये कितना हो गया हाफ इंटू 2, क्योंकि बेस कितना BD है ना, BD और इज इक्वल टू ए ही है, हाइट 10 है ना ट्रायंगल का, CD है ना हाइट इंटू 10, ठीक है। अच्छा प्लस ये क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्या हाइट
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये फुल एरिया इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल एरिया, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, प्लस इसका क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, समझा। लेंथ कितना है इसका, 2 सेकेंड्स, ब्रेड्थ कितना है 5, 10 plus 10 20 ठीक है। तो ये 2 2 कर 10 plus 10 is equal to 20 20 मीटर। मीटर डिस्प्लेसमेंट है ना, मीटर डिस्प्लेसमेंट मीटर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है भाई साहब, तुमने ही बताया ना क्लास शुरू किया तो, मैंने तो बताया नहीं। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एक बार ये समझ में आ गया, 9 आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले अगर तुमने अच्छे से थ्योरी समझ लिया तो न्यूमेरिकल करने में मजा आता है। अभी हमारा पूरा ग्राफ खत्म हो गया है, अभी हमको खाली इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकालना है ग्राफ यूज करेंगे। कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अभी सबके पास ये न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी है, खरीदी नहीं तुम लोगों ने, अरे बन ठीक है है। घर पे है। तो उसमें ये जो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट ग्राफ के बाद वाले, वो सारे होमवर्क, क्या इन टेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, वो है ना 3 ये जो 3 क्वेश्चन है ना, पेज नंबर लिख लो, पेज नंबर 81। और क्या है नेक्स्ट क्लास में होमवर्क, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 81 एनसीईआरटी, ठीक है। चलो I'll see you in the next lesson. इसको बोल इसको उसने किया है क्या? मैंने किया क्या Well, क्या है? ये क्या है?